Today, as the Supreme Court takes up the hearing, another question that has been raised by the Muslim side is on the leaking of the report that is being filed in the court. Questions being asked on why is it that there are leaks on this survey that has been conducted inside. But all eyes, as we said, is going to be on the Supreme Court, and my colleague Shivya also joins us to get us more details on the new petition that has been filed by the Hindu side, questioning whether, and of course requesting Gyanvapi to be exempted from the Places of Worship Act. Yes, of course, we have the petition on Times Now, and let's have a quick look at what exactly has been cited in this another petition which has been filed in the court. The Hindu side has gone ahead and has said that in fact the original temple was partly demolished, and utilizing the remaining structure and the materials, a construction was raised and named alleged Gyanvapi Mosque, whereas the deities continued in visible and invisible form within the premises of old temple. They have also gone ahead saying that if any portion of temple is demolished under the orders of a ruler, then the same will not change the religious character of the shrine. So this is one of the important points that have been mentioned in this another petition, and as was just mentioned by the Hindu side on Times Now as well. आमिर, आपके पास आते हुए इस मामले में, क्योंकि टिल द टाइम द सुप्रीम कोर्ट डजंट टेक अप द वाटर, द वाराणसी कोर्ट कैन नॉट कंटिन्यू विद इट्स प्रोसीडिंग्स, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या होने वाला है? Well, that's right. The Varanasi court can only take up the matter post the Supreme Court hears the Muslim side appeal in the apex court, and therefore the Varanasi court has already posted all these matters pertaining to the Gyanvapi complex to Monday, the 23rd of May. As far as developments within the Allahabad High Court are concerned, it pertains to the original petition that was filed in 1991 by the Hindu side, on which the arguments are on from the Hindu side. Once they conclude, and most likely they'll conclude this afternoon itself, the court will also take in the contentions or objections that are raised by the Muslim side. So perhaps in one or two hearing, we'll have the court reserve the order, which perhaps it may deliver at a later stage. But definitely hearing of the Gyanvapi case at a crucial juncture in all the courts, from the civil court to the high court to the apex court. Most importantly, all eyes fixed on the Supreme Court, whether it allows the application of 1991 Places of Worship Act on the Gyanvapi case, because if that happens, then the entire case will fizzle out, and perhaps we'll wait for a parliamentary nod in terms of changing the 1991 Places of Worship Act. But in case the Supreme Court allows the lower court to go ahead with the proceedings in the Gyanvapi case, it definitely seems that the justice here will be done, will be fast-tracked, and perhaps in a few months from now we may hear something really conclusive as far as Gyanvapi complex case is concerned from the civil judge court here in Varanasi. All right. Ashutosh is also with us. Even as the case continues in the court, the hearing will go on. Ashutosh, we have accessed an exclusive report as well that had been filed. पहले report में भी ये था कि अंदर मंदिर के कुछ remnants है. In the second, that was called a biased report. Then we accessed the second report, और second report में भी यही है कि वहाँ पे मंदिरों के कुछ remnants है. अब ये जो pictures भी मिले हैं वहाँ मस्जिद से, these are some of the things that have come to bolster the claim of the Hindu petitioners कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, this is what shows कि वहाँ पे एक मंदिर था. बिल्कुल, हिंदू पक्ष लगातार ये दावा करता रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर, उसके चारों तरफ अगर हम बात करें, सिर्फ बाहरी दीवारों ही नहीं बल्कि तहखाने के अंदर हो या फिर ऊपरी हिस्से में भी कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं से जुड़े ही जो कलाकृतियां हैं, ग्रह है, विग्रह है, इसके साथ साथ हमने देखा था कि वहां पर कमल के निशान थे, शास्त्री के निशान थे, कुछ घंटियों की लड़ियां थी जो कि एक तरीके से नागर शैली में बनाई जाती हैं। आपको बता दें कि उत्तर भारत में जो भी मंदिरें बनते हैं वो शैली में ही बनते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं नागर शैली से ही बनती हैं। और अब जितनी भी सर्वे रिपोर्ट आई है, मतलब कि अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट हो या फिर विशाल सिंह की रिपोर्ट हो, दोनों रिपोर्ट में ये साफ तौर पे इंगित किया गया है, इशारा किया गया है कि मस्जिद के अंदर कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो कलाकृतियां हैं, मूर्तियां हैं, वो विद्यमान है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि
इस पर कोर्ट क्या अपना डिसीजन लेता है। इन सब के बीच में आज जो अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत देता है कि निचली अदालत में फिर से अगर बहस शुरू हो, तो इसमें आज का दिन 3 जो सबसे महत्वपूर्ण याचिका है उस पर बहस हो सकती है। सबसे पहली याचिका सीता साहू, रेखा व्यास और मंजू व्यास ने ये एक अपील की थी कि जो वजू खाना है, वजू खाने के ठीक नीचे शिवलिंग है और वो शिवलिंग चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई है, लिहाजा उस दीवार को तोड़ने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही जो वहां पर मलबे जमा है, मतलब कहा यह जा रहा है कि वजू खाना के ठीक नीचे मिट्टी का काफी ढेर है, उसे हटाया जाए और सर्वे की जो प्रक्रिया है उसे एक बार फिर से शुरू किया जाए। इसे लेकर आज बहस हो सकती है। इसके साथ ही जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण याचिका है वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी जिसमें अदालत ने वजू खाने को सील करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि चूंकि वजू खाना सील होने की वजह से वहां पर जो नमाजी आएंगे उन्हें काफी दिक्कत होगी, वजू करने में दिक्कत होगी। ताजा जानकारी ये भी मिल रही है कि जहां तक एक अपील करी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां ना आए। आज जैसे मुद्दा एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, सो द अपील दैट इज बीइंग मेड फ्रॉम द मुस्लिम साइड दैट not many people gather even when it comes to offering namaz, because that is the exemption that has been given to them by the Supreme Court. But speaking on the legal factor there, Harish, if you can help us understand, because this was the main objection that was being raised by the Muslim side, saying that there is an attempt to change the religious character of the masjid. It is not just a survey that this is being carried out, there's much more to it.